Good evening, guys. I hope you are doing good. I am also doing good. So let's start with today's session, that is Accounting Standard 1 illustration part. So in last session, we have seen disclosure of accounting policies. But before starting any session, first we will quickly revise all accounting standards and tell me in comment section how many accounting standards now you are aware. Okay, all names of the accounting standards. So tell me fast. Number 1, disclosure of accounting policy. 2 is inventory valuation. 3 is cash flow statement. 4 is contingencies and events occurring after balance sheet date. 5 is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. 6 is better removed from the accounting standard list. 7 is a construction contract. 8 removed. 9 is revenue recognition, and 10 is property, plant and equipment. 11 is effects of changes in foreign exchange rate. 12 is accounting for government grant. 13 is accounting for investment. 14 number is accounting for amalgamation. 15 is employee benefits. 16 is borrowing cost. 17 is segment reporting. 18 is related party disclosure. 19 is accounting for leases, and 20 number is earning per share. 21 is consolidated financial statement. 22 is taxes on income, and 23 is investment in associates in consolidated financial statement. 24 is discontinuing operation. 25 interim financial reporting. 26 intangible asset. 27 investment in joint venture, and 28 is impairment of assets, and 29 is provision, contingent liability and contingent assets. I hope you are aware about all these names, and today we are going to start with very interesting illustration 1 of S1, how to write the answer in exam. Okay, say good evening beta, jaldi join ho jaiye. I know everyone beta, after a long break matlab almost after Sunday, so Monday, Tuesday, and this is a 4th day. Now we are going to start with our session. So every one of you say good evening beta in the comment section. Chalo jaldi join ho jao, फटाफट join हो जाइए बेटा. Yes, जल्दी ज्वाइन हो जाइए. नॉट अ सिंगल सेशन जो आपने मिस करना चाहिए. से गुड इवनिंग इन द कमेंट सेक्शन फटाफट. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. I all watch all the previous sections, sir, lectures. Even in foundation 2, I was from the science student till 12, but passed foundation in my very first attempt. Shivam Kumar. Yes, very good beta. Congratulations. 27 accounting standard, but I can't match your speed. Okay, Jagatji, it's okay beta. It's okay beta. Teacher is teacher na ultimately. So you cannot all in 3 minutes. Okay, Vaibhav Sharma, all in 3 minutes is good speed. Only 20 is yes. ठीक है. आज बहुत सारे गुड इवनिंग आए हैं. यस, टुडे इंटरेक्टिव लेक्चर लग रहा है मुझे. चलो, वेरी गुड. मिस नहीं किया सर. टाइम वेल स्पेंड एंड ऑल्सो सेशन रिमेन्स इंटरेस्टिंग इन लाइव. ओके, चलो. So everyone has to attend all accounting standards in live. देवी जी गुड इवनिंग बेटा. अंशुल, अमूल्य जी, मयंक जी, आलोक. यस, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता. ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स कमेंटेड बेटा over here, so I can't take all names. And A by SS sir. Okay, accounting standard by Sanket sir. Okay, take it बेटा. चलो, A means advanced accounting. Sorry. चलिए अभी स्टार्ट करते. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज. यस बेटा, प्लीज ओपन यूर 100 पेजेस की नोटबुक रे. 100 पेजेस की नोटबुक आई विल शो यू ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट. 100 पेजेस की बुक. So you can see here how beautifully she has written all these things in 100 pages book. तो आपको ये देखना है 100 pages के बुक में इसने कैसे लिखा हुआ है, and all things आपने भी लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है. So presentation and disclosure based accounting standards. So this is chapter number 4 and accounting standard 1, disclosure of accounting policies. Comparison with previous figures and with other figures. So comparison is always important. Fundamental assumptions. So last year and current year का आप लोग previous figures और current year के figures you comparatives you are taking. Fundamental accounting assumptions, going concern, accrual and consistency. Assumptions, going concern and enterprise will continue its operation in the foreseeable future. But we already have seen this part, so it's your responsibility to write it in the 100 pages ka book. Okay, and today first time we are going to write it in, not first time, already we have written 400 के pages book में with index. Index के साथ हमें लिखना है no intention to curtail the scale of operations as per going concern concept, and therefore we follow historical cost concept. Sir, please watch my previous session. So recalling all these things, you can recall it any point. Okay, consistency, practice of using same accounting policies year after year, that is in the for similar transaction in all accounting period. Consistency improves comparability of the financial statements. How many assumptions are there? So accrual assumption,
assumptions. Received or paid is not important whenever expenditure is incurred and income is earned. Red pen से लिखा गया है income is earned and expenditure is incurred. And matching concept is adopted. It is mandatory follow accrual basis as per Companies Act. And fundamental assumption if not followed, beta, today we are going to see you may have question over this. If not followed, then beta you have to disclose it. And if you are following, there is no need of disclosure. Okay. What are accounting policies? Accounting policies means specific accounting principles, ratta mar by heart point, and methods of applying. You can see here by heart likha hua hai. Methods of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements. Example items to be disclosed: inventories, cash flow statements. And here inventory FIFO weighted average and cash flow statement, we have direct and indirect method. So cash flow statement we have separate chapter accounting standard 11, accounting standard 3 chapter 11, chapter 11 accounting standard 3. So I'm going to take cash flow statement not in this chapter number 4. I will take that question topic in the chapter number 11. Okay, chapter number 11 में हम लोग continue करेंगे. Yes. चलो 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 ज्वाइन हो जाओ फटाफट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए 6:15 होने को आ गए. यस, प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, यस, इफ एंटिसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर नेवर रिकॉर्डेड, बेटा रिमेंबर दैट वी हैव वन क्वेश्चन ओवर ऑन दिस. एग्जांपल 1 and 2 we are going to see for today. We are going to solve example 1 and 2 based on the prudence concept. Substance over form क्या बोलता है? ये legal form is not important but substance of the transaction is important. हायर परचेस के केस में ownership is not important, but when asset is recorded by the user of that asset, not by the owner of the asset. So higher purchase में हमने ये देखा था. Materiality, if that item is material, means what? If it influences the decision of the user, then it is called as a material item, and material item you have to record it separately. Prudence concept, yes, already you are aware. The uncertainty, रट्टा मार point है, ये लिखना रहेगा इधर. So by heart point है, रट्टा मार point है. Prudence concept, the uncertainty associated with the future event, probabilities are not anticipated, but losses are to be provided. Okay, sir. Substance over form already beta explained, and materiality, the item of knowledge of which might influence the decision of the user, not always a matter of relative size. This is red pen adjustment. Red pen line है, ये भी रट्टा मार है, ये भी रट्टा मार है. Materiality. Change in the accounting policies if it is required by the law, if required by the standard, and for the better presentation. And this chart is very, very important. Material in the current period, if amount is ascertained, disclose the amount. If amount is not ascertained, then disclose the fact, not material in the current period, but ascertainable in the later period, then better the fact to be disclosed in the current period. And we have finished with accounting standard 1 over here. और इसके लिए मैं थैंकफुल हूं हमारे एक स्टूडेंट को जिसने इतना अच्छे से लिखा हुआ है, तमन्ना पाती जी फ्रॉम हरियाणा. तो उसके लिए यस, बहुत ज्यादा थैंकफुल, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. Okay. Divya Kumari is saying, sir. Divya Kumari, this is not my handwriting. तो मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है. प्रिंस बेटा, नो पर्सनल टॉकिंग. सौरव दास बोल रहे, सर आई नेवर फील बोर्ड इन योर लेक्चर्स. थैंक यू बेटा, सो नाइस ऑफ यू. और ये लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, अपने फ्रेंड्स लोगों में आपको सर्कुलेट करना है, और आईसीआई ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है फटाफट, और आपके फ्रेंड्स लोगों को बता देना है कि आईसीआई की क्लासेस बहुत अच्छी होती है. अटेंड इट रेगुलर बेसिस पे. एवरीवन हैज टू अटेंड इट इन द लाइव ओनली. तो आपको मैं पहले ही बोल देता हूं, कोई भी आईसीआई के लेक्चर छोड़ के दूसरे लेक्चर मत देखना, क्योंकि ये प्योर और प्योर आपके स्टडी मटेरियल बेस्ड लेक्चर्स होते हैं. एवरी फैकल्टी हियर, नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स बट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एवरीवन इज टेकिंग केयर फॉर कवरिंग यूर स्टडी मटेरियल. सो यहाँ के फैकल्टी चुन के लिए जाते हैं. तो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी मिस मत करिए एक भी सेशन, नॉट ओनली फॉर माय सब्जेक्ट बट यू आर गेटिंग टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी ऑल्सो. मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून टाइम यू विल गेट फॉर योर सेल्फ स्टडी. तो सेल्फ स्टडी करते रहना, अच्छे से करना. 100 पेजेस की नोटबुक मेंटेन करना, 400 पेजेस की बुक मेंटेन करना. डोंट थिंक फॉर टुडे, ऑलवेज थिंक फॉर द फ्यूचर. ऑलवेज थिंक फॉर द फ्यूचर. रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके सर. Yes, beta, today I'm going to give you the example of specific accounting principle. Don't worry. Sir, I learned all accounting standard and my record is 49 seconds. Nisha Rana bol rahe. Yes, very good. Satyam Singh, good evening, sir. Okay. Sir, unit 2, not chapter 11 cash flow statement. Okay. But I know unit 2 is also chapter 11. Unit 2 is a cash flow statement. You can check over this.
Pooja ji, yes. Only revision part I have taken it in English. Revision part, sorry, in Hindi, and remaining part I will take it in English. Don't worry. Today we are going to solve illustration. So open your study material, sir. Open your study material. चलो जल्दी से स्टडी मटेरियल को ओपन कीजिए. नो. संपूर्ण रॉय जी, संपूर्ण रॉय. So now I will be slow. This was a revision, and now I will be very slow, beta. Okay. Beta, yes, I haven't confirmed it. Rama Devi ji, next lecture I will definitely confirm it. Chalo. Start with example number 1. Prudence concept. Please take screenshots in your 400 pages book, and index I will give it in the writing. Index मैं आपको writing में दूंगा, and remaining part you may take screenshots. How to write the answer. Chalo. Example 1. After the break, beta, we are going to start with a new standard, that is accounting standard 17. आज का नया standard होगा accounting standard 17, and in that I am going to take all illustrations first, and theory I will explain it in the next session. So that will be thoda sa reversal method. Illustration first to give the idea about the accounting standard, and after that A17 के बाद we are going to take theory in the next session. Next session means on Friday itself. Okay. चलो join हो गए बेटा सब लोग. Yes. Very good, beta. Almost 280 plus students are attending in the YouTube, और app पे तो 1000 plus students होते हैं. Very good. So for selecting only and only ICAI. Okay. Yes. How to increase the video quality of this? How to increase? It's very simple. On YouTube, beta, if you press क्वालिटी सेटिंग्स में जाइए, और सेटिंग्स में जाके बेटा गुंजन कुमार यू कैन चेंज यूर सेटिंग्स टू माइट बी 480 होगा तो उससे बेटर होगा 720 वगैरह, तो उसको चेक कर लीजिए. 1020 होता है, 1080. यस यस 1080. चलिए. सो शुड आई स्टार्ट बेटा? एग्जाम्पल नंबर 1 of accounting standard 1. Example 1 से हम लोग शुरू करेंगे. The most common example. Now why this question? This question is prudence based concept. Okay, what we are going to learn in this concept? Prudence. तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले? Prudence. Prudence means anticipated losses are never are always recorded, but anticipated profits are never recorded. क्या होता है concept? Anticipated losses. Yes, do this chart on question itself. Open your study material. Open your study material, beta. Write it on page number 4.85. Sorry, 4.5. Okay. Losses. रिबिका, आपने जो भी कमेंट्स है वो मुझे ऐप थ्रू ही भेजे हुए हैं. YouTube doesn't allow you to send comments. Yes. तो losses, और जिनको भी मेरे साथ communicate करना है, those students who want to communicate with Sanket sir or ask any question, please download BOS app, and on app you can ask me questions, you can send message over there, you can watch my sessions, and YouTube पे you cannot give comments. Okay, YouTube पे our comments normally off होते हैं, so you cannot comment on our YouTube channel. So if you want to communicate, always go with POS app. अरे भाई, आपके लिए तो इतना अच्छा किया है ना इंस्टीट्यूट ने, कितना खर्चा कर रही है आपके लिए. ओके. लॉसेस. लॉसेस क्या करेंगे बेटा? लॉसेस वी आर गोइंग टू, एंटिसिपेटेड लॉसेस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड, एंड प्रॉफिट्स नेवर रिकॉर्ड. नेवर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स. ओके. नाउ why inventory is a question of prudence, that today I'm going to explain you why inventory valuation is prudence concept, is a prudence concept. ठीक है.
नेहा जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करके बुक्स ले लो, अदरवाइज टेक प्रिंट आउट्स. प्लीज क्लोज दैट डोर and tell them my lecture is going on. Suppose a trader has purchased 500 units of certain articles at rupees 10 per unit. He sold 400 articles at rupees 15 per unit. 15 per unit. If net realizable value of unsold article is rupees 15 and the valuing the stock is rupees 10 per unit. See, so if I open the trading account, if I open this trading account, don't write anything. I will give you a screenshot to write the answer. Okay. Two purchases. Two purchases. Beta Aditya, I cannot give you, sorry, Devendraji, I cannot provide you. I know it's, providing mobile number, but beta, the problem is that if I provide you my mobile number, 1000 queries. How much? 1000 queries daily I have to answer. It's not possible. If you have genuine query, you can mail us. Don't worry. आप लोग हमें मेल कर सकते हो या आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो. इफ आई थिंक यूर क्वेरी इज रिलेवेंट वन, आई विल टेक दैट क्वेरी, अदरवाइज आई इग्नोर दैट क्वेरी. ओके. एंड नॉर्मली हमारा टीचिंग ऐसा है कि यू वोंट गेट एनी क्वेरी. ओके. यस विश्वा, आई कैन एबल to see you answer. Chalo. Now next 15 minutes, I don't want any interruption. So you can ask me questions only after 15 minutes. I will take 3 examples and then you can ask me queries. So now I will focus only on my teaching. So 500 units into rupees 10 is my purchases. You can see here 500 units into 10 rupees. 5,000. By sales, how many units you sold, beta? We sold only 400 articles. At what price? At what price? 15 per unit. So 400 units and rupees 15 per unit is 6,000. To gross profit is a balancing figure, beta. And now the closing stock. See, if I record closing stock, if I record the closing stock at rupees 100 units, if I record it at rupees 10, I have one option. I have one option to record it at 10. And option 2, I will record it at 100 units at 15. See, this 5 rupees, try to understand the concept. Try to understand the prudence concept. एक बार हिंदी में भी बता दूंगा. Don't worry. I will explain it in Hindi also. Don't worry, beta. 5 rupees is my what is called as unrealized profit, which I have not actually received. 15 rupees is not my actual selling price. This is only on 31st of March. And if I record it at 15 rupees, then my profit goes up. If I record it at 15 rupees, my profit goes up by 5 rupees into 100 units. So profit goes up by 500 rupees, which is not actually I am receiving it. Sir, if I am living in one flat, which cost me rupees 60 lakhs before 10 years, and today, if that flat is of 2 crores, remember, I'm not going to sell that flat. So why should I consider that as a profit? When I'm going to sell it in the market, then beta I can record my profit. Otherwise, why should I record that profit, which is called as unrealized profit? Okay. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Unrealized profit. ठीक है? Now the question is, opening stock beta Bilas is not there. So that's why I have not recorded opening stock.
So I will record it at 10 rupees only. At what price I will record it at? 10 rupees. So 6,000 plus 1,000, 7,000 minus 5,000. My profit will be 2,000. You can check your profit is 2,000. How much is your profit? Trading account will be the simple presentation for that. एक बार मैं हिंदी में बोलता हूँ, एक बार समझ लीजिए. So 2000 is my GP. South Indian students, I hope you understood it. It's very simple. At what price you are recording it? And normally I have seen, yes, कि South Indian students are really, मतलब I won't compare with other students are also intelligent, but I have seen South Indian students, beta. I taught in Bangalore, so I know the difference between Bangalore students, beta. They are absolutely, when I taught them in Bangalore, beta, in one, if I speak it only for one time, they understand each and every concept in detail. Okay, they are intelligent. What I face in my life, okay, what I have seen in my life, ki, yes, Bangalore students are intelligent. So South Indian students, normally I have seen, and Bangalore also, one batch I taught it in the Bangalore also. So I remember those days कि जहाँ पे बहुत होशियार बच्चे रहते हैं बेटा, बाकी के स्टूडेंट्स डोंट टेक इट पर्सनली. ओके, चलिए. Now let's try to understand it in Hindi. एक बार ध्यान दीजिए बेटा, देखो ये क्वेश्चन में टू परचेसेस 500 यूनिट्स आपने परचेस किए एट ₹10 पर यूनिट, तो हमने 5000 को रिकॉर्ड किया. सेल्स कितना था बेटा? उसमें से 400 यूनिट्स हमने सेल कर दिए. 400 यूनिट्स इंटू 15 रुपीज, तो 6000 का सेल हुआ. और क्लोजिंग स्टॉक जो था, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा बेटा? 100 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा. अभी 100 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो 10 रुपए से रिकॉर्ड करो या 15 रुपए से रिकॉर्ड करो. 15 रुपए से रिकॉर्ड किया तो मैं अननेसेसरी, जो बेचा ही नहीं वो काई को मैं रिकॉर्ड करेगा, तो 5 रुपीज इज अनरियलाइज प्रॉफिट. तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 5 रुपीज, विच इज नॉट अलाउड. तो ये 5 रुपए अनरियलाइज जो कमाया नहीं, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते. 10 रुपए लेके हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग निपटा देते. तो 10 रुपए पे रिकॉर्ड करना है, विच इज लोअर के बेस पे. तो ये जो है ये हमको रिकॉर्ड करना है 10 रुपए पे, नॉट 15 रुपया, क्योंकि हमने वो कमाया नहीं है. आया समझ में बेटा? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है कि अननेसेसरी प्रॉफिट को क्यों फ्लक्चुएट करके बता रहे हो रे? जरूरत नहीं है ना प्रॉफिट को ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताने को. ओके सर. बेटा माधव, हर्ट नहीं हो रहा है बेटा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं. यस, इतना क्या है बेटा? कोई रहेगा होशियार तो उसमें कंपैरिजन किया तो क्या है? मैं भी खुद बोलता हूँ ना, अभी मैं भी वेस्ट से ही हूँ. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब ऐसा नहीं है मेजोरिटी क्राउड. नाउ यू विल बी, हो सकता है कि वेरी इंटेलिजेंट वन, तुरंत अपने एनआरओ का बच्चे ऐसे बोलना लग गया. चलिए, तो नाउ ट्रेडिंग अकाउंट वी अंडरस्टूड. 8 rupees and 10 rupees. Now we have option to record 8 rupees and 10 rupees. It's long back beta in Bangalore, Rakshit. So now 8 rupees and 10 rupees. Now tell me, 8 rupees or 10 rupees, at what price I should record it? 8 rupees. Why, sir? Because in future I am going to incur that loss, 2 rupees ka loss, sir, but the cost is 10 rupees, but NRV is 8 rupees. Assume NRV is 8 rupees, the cost is 10 rupees. In that case, the future loss, I will book it today. I won't wait for the loss. I will record it today. So my profit will be 200 se down ho jayega. So it will be 1800. You can check 200 se profit down, and here 1800 will be my profit. Okay, very simple, very simple, that I will record it at 1800. It's simple beta. Okay, so I will record it by 2 rupees less. चलिए, ओके, ठीक है. So how to write the answer? How to write the answer, sir? One, please tell us how to write the answer. मीनाक्षी, कॉस्टिंग की क्लास आगे स्केड्यूल हो जाएगी. अदर फैकल्टीज आर देयर, आई एम नॉट देयर फॉर कॉस्टिंग क्लासेस. ओके, इन बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप, तो इधर बीओएस में, इफ यू वांट टू परचेज इट बेटा, यू कैन बाय इट फ्रॉम पिंपरी चिंचवड ब्रांच. चलिए, यू विल गेट अपडेट्स फॉर दैट. अरे वाह, आज तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया बेटा. आज क्या हो गया? गांधी जयंती, लंबी छुट्टी के बाद बहुत सारे बच्चे रिकॉर्ड आज लेक्चर देखने आ गए.
Very good, very good, very good. चलो index, index, index. Take a screenshot. So first example is of prudence concept. क्या था? Prudence concept was the first example. Yes, clear है? And prices are both are same. तो बेटा क्या है ये एकदम फालतू क्वेश्चन था. अनिल जी, cost or NRV both are equal, then we will consider any. Na, it's okay. Case one, if NRV is 15. Yes, how to write the answer? How to write the answer? You can take a screenshot. As per S2, inventory should be valued at lower of cost or NRV. Inventory is recorded at rupees 10. To purchases 500 units into 10, by sales 400 units into 15, and by closing stock 100 units into 10. So 7,000 is your trading account ka total and balancing figure. Profit is rupees 2,000. And if you consider, note लिख के दिया है, if you consider closing stock at rupees 15, then that will be unrealized profit, and which is not allowed. But as it is unrealized profit, we should not record it. Okay, we should not record it. Take a screenshot. 2,500 is not allowed. If you record it at 15 rupees, your profit will be 2,500. So don't record unrealized profit. So 15 rupees पे allowed ही नहीं है. एकदम मस्त है बेटा. No, beta, it doesn't affect periodicity concept. On 31st March, we have to break our profit. That's why we are recording it. On 31st of March, we take closing stock. That is, yes, periodicity concept plus you can call it as conservatism concept. Yes, screenshot ले लिया बेटा. Please, please, please write it in your 400 pages का book. कहाँ पे लिखोगे? 400 pages book after the class itself. And don't miss a single session, and don't skip these sessions or writing after the session, beta. Okay, please maintain your 400 pages book properly. It will not help you today. You will understand it after 6 months. You will forget everything, and after that your 400 pages का book only will help you out. Okay, तो आप लोगों को अच्छे से maintain करना है. Okay, sir. Case 2, NRV is rupees 8. Case 2, NRV is rupees 8. The cost or NRV, whichever is lower, I am going to record it at. Inventories will be recorded at rupees 8, and by sales and by closing stock and to purchase and balancing figure is profit. Yes. Yes, beta. Index ka screenshot at the end. I will give you. Don't worry. Madhavji, I will give you index ka screenshot at the end. फ्राइडे को कोई छुट्टी नहीं है ना. फ्राइडे को आई थिंक माय लेक्चर विल बी देयर. बताते जाओ एडवांस में. केस 2 ओवर. Now I will take example number 2. See, example number 2 is only explanation part. Understand this explanation. I will take each and every example. Don't worry, all illustrations. Exercise of prudence does not permit creation of hidden reserves. So what is the statement? We are not getting this statement. See, sir, you are telling that anticipated losses are recorded. What happened? Anticipated loss, if you record, your profit may go down. Don't take undue advantage of this principle. What S1 wants, don't take undue advantage of this principle. So what is the meaning of this? If you record anticipated loss, definitely your profit will be down. यदि आपका profit down हुआ, तो your shareholder will get less dividend. And to pay less dividend, you are taking the benefit of this prudence concept is not allowed. Okay, deliberately don't do this. ठीक है? And overstate your liabilities is also not allowed. So liability overstate means credit side overstate, and credit side matlab expenditure will be overstate. Expenditure overstate means profit will be down.
ओके, सो लाइबिलिटी इंक्रीज करना मतलब अल्टीमेटली एक्सपेंस इनकर करना, expenses incur करना, overstating liabilities and losses means profit will be understated and this is not allowed. Don't take benefit of this word कि सर हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो किया, नो 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 बेटा, नो, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। आया समझ में? सो ये आपको अलाउड नहीं है, इतना याद रखिए। नो नीड टू अप्लाई दिस। ओके, सपोज अ कंपनी इज फेसिंग अ डैमेज सूट, company is facing a damage suit, no provision for damages should be recognized by a charge against profit unless probability of losing the suit is more than the probability of not losing it. Probability means 50% chances. Probable means more than 50%. 50% से ज्यादा चांसेस है कि आपका लॉस होने वाला है, then only record it. Okay, now I will explain it in Hindi. So try to understand the concept in Hindi. बेटा, मजबूरियां होती है और वो मजबूरियों का फायदा मत उठाइए, समझ लो सेंटेंस को। ओके, तो एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होगा कि भाई आपको मैंने सिखा दिया सर लॉसेस को रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड मत करियो, तो आपने क्या किया, जानबूझ के लॉसेस रिकॉर्ड करना शुरू किया। जानबूझ के लॉसेस रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैसे होगा, एक तो आप लाइबिलिटी बढ़ा के बताओगे, लाइबिलिटी बढ़ाया तो एक्सपेंसेस बढ़ाना पड़ेगा या लॉस बढ़ाना पड़ेगा, तो ये अलाउड न थी, ये बेनिफिट नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का, क्योंकि एकदम सिंपल है, ताकि आप क्या करोगे, प्रॉफिट जानबूझ के कम करोगे, प्रॉफिट कम करोगे तो आप क्या बोलोगे कि शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड लेस देंगे, यू आर मैनेजिंग, यू आर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कटिंग and you are taking benefit of this principle, is not allowed. So auditor will check it and auditor finds you have taken, कि आपने ऑडिटर ने देखा कि आपने इसका फायदा लिया हुआ है, तो ऑडिटर आपको क्या बोलेगा, भाई ये नहीं करना है। प्रोबेबल, अभी क्या इसका एग्जांपल दिया कि आपके अगेंस्ट कोई केस चालू है, आपके अगेंस्ट कोई केस चालू है और आपको पता है कि आप केस जीतने वाले हो, अरे ऐसा ही केस लगा दिया मेरे अगेंस्ट इन्होंने, फिर भी आपने उसकी प्रोविजन करके रखी, अलाउड नहीं है। उसकी प्रोविजन मतलब लॉस की, कि मैं केस हार सकता हूं, आपको गारंटी है कि आप केस जीतने वाले हो, तो काहे को ये केस के अगेंस्ट प्रोविजन कर रहे हो, लॉसेस नहीं बताने का। क्या नहीं बताने का बेटा, लॉसेस को नहीं बताने का, ये याद रखिए। ओके, सो समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? यस, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया क्या बेटा? कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आया? से यस और नो, यस और नो, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बोलो हाँ, यस। बेटा, prudence concept, if genuine loss then you can record it, genuine loss, but you know you are going to win, still you are recording the loss, is not allowed. Okay, आपको पता है आप जीतने वाले हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप वो लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो अलाउड न थी, वो अलाउड न थी। ओके, यस। एनी अदर स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? मोहम्मद, प्लीज 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 बेटा, मैं वापस से आपको बोल रहा हूं मोहम्मद जी, डोंट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दो यू नो that you are going to win the case, but still you providing a loss is not allowed. Okay, ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट्स इज अलाउड, recording of provision for bad debts is allowed as per prudence concept, that I'm going to anticipate some losses from which are irrecoverable from the debtors, and therefore beta I have recorded it, so it is allowed as per prudence concept. Yes, very good beta, very good. Category beta, Pradyuman, that is the category. Pradyuman is a category. Probability of losing the suit, that point explains, sir. Probability means more than 50% probable. The word probable means your chances of losing
is greater than chances of winning in that case. Beta, see the result we are not aware. Okay, for example, you are giving CA exam. Okay, now you are not aware whether you are going to pass or fail, but you know you studied hard, and therefore you think that probably I will pass my exam. Probably means 50% more chances are there that you are going to pass the exam. See the sentence. And not probable, sir, I haven't studied. Yes, sir, personal life is more important as compared to my study life. And what happened? Now, after exam, you understood, eyes open. Sir, I have to study now at that time. You know, sir, you told us always to study hard, but we never considered it. Yes. And then result is failure. So now after the exam, you come to know before result. What? Probable nahi, not probable. 50% chances are more of failure. So ये mind को पता होता है ना. Similarly, your lawyer will tell you, technical person will tell you whether it's probable or not probable. So that is the example 2. Okay, and if it is probable, then only provide the loss. Clear છે? एकदम clear? Yes. बेटा प्रियंका, ओके, प्रियंका लॉस था, बट बाद में चमत्कार हो गया था। वो क्या हो गया? चमत्कार हो गया। आपने लिखा है कि सर लकीली बाद में केस जीत गए, तो ठीक है ना। हमने तो जानबूझ के, अकाउंट्स क्या बोलता है? अकाउंट इज एन आर्ट। सो अकाउंट्स ये नहीं बोलता है कि भाई गलती इंसान से होगी। आपको लगा था कि मैं केस हार जाऊंगा और हो गई, केस जीत गए। अभी पिछले साल को तो आप रीओपन नहीं कर सकते हो, तो ठीक है, इस साल प्रॉफिट बता दो कि हमने पिछले साल में ये लॉस बुक किया था एंड दैट वाज नॉट माय लॉस, तो हमने केस जीत गए, तो वो लॉस को रिवर्स कर दो। एकदम सिंपल, दैट इज अ रेक्टिफिकेशन। इन द नेक्स्ट ईयर यू कैन डू इट। Okay, you have shown that liability, cancel that liability account debit to profit. So next year you will record the income. So first year you have recorded loss. So what entry you have passed ki probable loss hai? So defeat in the claim account debit to claim payable or outstanding claim. Outstanding claim you have shown as a liability and claim is your loss. So you are recorded in the P&L debit. Now you won that case. Okay, so that claim is not no more. So outstanding claim को cancel करो and you show that losses को cancel करो, so P&L के क्रेडिट में आ जाएगा। It's okay that you won. आपने सब चीजें छोड़ दी थी बेटा। एग्जाम आपने फर्स्ट पेपर होने के बाद आपने उम्मीद छोड़ दी कि यस मैं तो फेल ही होने वाले, पर इंस्टीट्यूट ने कुछ चमत्कार कर दिया और आपके पुण्य आ गए बेटा, और वो केस में आप पास हो गए। तो फिर क्या करोगे? ओके, तो ऐसा मत सोचिए ना कि हम लोग लॉस में रहेंगे और ये होने वाला है। लॉस हमने बुक कर दिया था, हमने अटेम्प्ट की पढ़ाई भी शुरू कर दी और बाद में समझ में आया यार संकेत सर ने पढ़ाया हुआ सब कुछ आ गया और हम लोग पास हो गए सर, क्या बात है। और संकेत सर के पुण्य और हमारे पुण्य दोनों साथ में आ गए। ओके, तो ये तो बात वाली बात है। यस, चलिए नाउ, ऐसा कभी नहीं होता, होएगा बेटा, पढ़ाई कर, क्यों नहीं होएगा। लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड कर। हाँ जी, चलो। Illustration 1 and example 3 are similar. Illustration 3, believe me, and example 1 are similar. Okay, so now this is a question of change in policy. Let's understand this question properly. Okay, Harish Singh is asking, sir, how the auditor verify that company recorded unnecessary losses better because of his experience. He thinks while doing the auditing, he came to know what is the loss was recorded by the company. And he thinks that these expenses, he should not record it. This loss, they should not record it. He has experience, na beta. So he can tell to company management that you have made a wrong policy. And then he can give, otherwise, suppose if company is not ready to listen, so beta, he has the power of that pen, जिसके थ्रू वो ऑडिट रिपोर्ट लिखेगा, साइन मारेगा। वही तो सीए सीख रहे हो ना आप लोग, साइन मारना है फ्यूचर में, तो वही तो करना है बेटा। यस, हाँ, वो साइनिंग अथॉरिटी के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ।
Sir, scientific calculation for making different provisions like for bad debts. Yes, beta. Ruturaj, there are some scientific calculation, past experience. Past experience will tell you ki how much percentage you have to provide it for. Okay, so that is the only experience. You know, ki suppose you have given to your friend 500 rupees and you are aware ki he will never give it back. So that will be a provision for bad debt. Simple. और कुछ क्वेश्चन शक या सवाल? ओके, चलिए. सो हम लोग अभी आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे. So, illustration 1. Before break, we have to finish these all illustrations and TYK questions. 7:15 is my target to finish with this all illustration, not 7:15, 7 o'clock. Because segment reporting is a big standard that we have to understand it today itself. Or don't miss after break का session. Today's session is very, very important. Break के बाद का session कोई भी miss नहीं करेगा. आज का session बहुत ज़्यादा important है. पहले ही बोल देता हूँ. Today I'm going to start very different accounting standard. S17 which you have never listened in your past. Okay, segment reporting हम लोग break के बाद करने वाले. Thank you. चलो, in the books of Messrs Prashant Limited, closing inventory 31st March. Now no more questions. I'm going to focus on this illustration 1. In the books of Messrs Prashant, closing inventory 31st March 2002 amounted to rupees 1,63,000. कितना amount है बेटा? 1,63,000. That is as per FIFO method. Sir, direct entry students, try to understand. We are valuing inventory under FIFO method. So what is FIFO method? Yes, I will explain it within 2 minutes. So try to understand FIFO method. Sir, I bought 10 pens or 10 Maggies. Beta. Maggies is my favorite example. Yes. मम्मी मम्मी भूख लगी 10 Maggies जल्दी से समझ लो. So this 10 Maggies you purchase at rupees 10 per Maggie. Okay. Then what happened? Beta? After that, you bought next 20 Maggies. But company raised their cost or prices of the Maggie, and now Maggie is costing you rupees 12. You mix these two Maggies, beta. You mixed these both Maggies. Okay. And out of that, now your business is to sell Maggie. Out of that, 15 Maggies you sold at rupees 15 per unit. 15 Maggies you sold for 15 per unit. And you left with beta or 20 Maggies. 20 Maggies you sold for 25 कर दो चलो ज्यादा नहीं अभी नहीं अभी no change. So 30 and you left with 5 Maggie. So direct entry students, try to understand. 5 Maggies, if it is FIFO method, first in, first out method, then the answer is 10 rupees Maggies, first in, first out. So 10 Maggies beta already sold, first in, first out. And you left with 5 Maggies. You left with 5 Maggies. And these Maggies is costing you rupees 12. This Maggie is costing you rupees 12. First in, first out. You left with this second lot, and second lot जो है वो आपको 12 रुपए का amount है. And sir, what about weighted average? Weighted average, how to calculate? 10 Maggies multiplied by 10. So this is the first lot की price. 20 Maggies multiplied by 12 divided by total number of Maggies 30. So this is weighted average. So weighted average answer is 100 plus 240 divided by 30. So what is the answer? 340 divided by 30. My price will be 11.33 under weighted average. So FIFO is giving me higher answer and weighted average is giving me lower answer in this example. Sir, which method we should follow? It is a choice of management. It is a choice of management. Management will decide कि go by FIFO method or weighted average method. You got the concept? So direct entry student, because my foundation का बच्चा, he knows everything.
We already did it in the foundation. But direct entry ka bachcha, beta, you are not aware about this. So FIFO and weighted average, how to calculate the answer? So lot 1 is already consumed. Lot 2 is in the closing stock. So first in, first out. पहला lot जा चुका है, दूसरा lot 20 मैगी से 12 रुपए से आया है. So that is the 20 मैगी 12 रुपए से. तो ये याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अरे समझा क्या मेरा बच्चा? वेटेड एवरेज क्या हुआ? 11.33. 100 magis into 10 plus 20 magis into 12 divided by 30 magis. Number of magis are 30. So direct entry students, understood? Yes. भावना बोल रही है सर हमने भी किया है ये, हमने ग्रेजुएशन में. वेरी गुड बेटा. सो इट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू. ग्रेजुएशन में तो बहुत कुछ कर लेते हो, बट ठीक है. जो बच्चा मुझे ग्रेजुएशन में कैसे पढ़ता है मुझे पता है भाई. एक दिन पहले हम लोग भी ग्रेजुएशन हुआ है बेटा हमारा. क्या करते थे हमें ही पता है. यस, वेरी गुड. चलो, सो नाउ व्हाट हैपन? Your first in first out method gives you answer of 1,63,000. कितना आंसर दे रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. एंड नाउ यू थिंक दैट कंपनी शुड चेंज द पॉलिसी. ठीक है ना? टू मेक इट कंपेरेबल विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स. योर कंपनी एंड सपोज फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक सीमेंट, they are using first in first out method example, but all their competitors they are using weighted average method. And auditor got changed. Informed Auditor informed Ultratech Cement management, why you don't want to change your method from FIFO to weighted average? All your competitors are using weighted average, and you are only using FIFO method. So change this method. And management also decided to change the method. It's very simple. Management also decided to change the method. The company decided to change the method from FIFO to weighted average. Okay. Weighted average method. FIFO method or weighted average method. Cost of inventory is now on the basis of weighted average method. Now this amounts to 1,47,000. So 163 to 147. 163 to 147. Your closing stock is getting down, and closing stock down means your credit side is down, and credit side is down means profit is down. Credit side down. Credit side down means profit down. Profit reduced. Profit decreased from 163 to 147. What is the difference? 163 to 147. 16,000 से प्रॉफिट नीचे आया सर. 16,000. And realizable value is 1,95,000. So realizable value is always higher side पे है. So your realizable value is higher. So I'm not going to record it. Don't record at NRV. Don't record. Why? Because NRV is greater than cost, na sir. NRV is greater than cost. Both cost, either FIFO or weighted average. So NRV का तो सवाल ही नहीं आता. So here how to write the answer? See Sanket sir's presentation. Sir, Simran, you can change the policy if it is required by law for better presentation. Consistency, yes. But now next year they can't change it to FIFO once again. Huh? Okay. See how to write the answer. Everyone will write it in 400 pages book. Not now, after the session. आज तो स्क्रीनशॉट लेने का है. स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये सब लिखना है. Okay. Sir, facts of the case. In the given case, Prashant Limited decided to change the method of valuation of inventory from FIFO to weighted average. From FIFO to weighted average. Fact is very simple. Disclosure of accounting policy. Any change in the accounting policy which has a material effect
should be disclosed in the financial statement. Any change, words को याद करो, any change, material effect, disclosed. 3 words को याद करो, अपने लाई पूरा याद आ जाएगा. Always think for that 3 words. The amount by which any item in the financial effect is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. Amount affected, ascertainable. 3 words. And when such amount is not ascertainable, amount not ascertainable, fact. Okay, Rattamar. By heart this point. Provision, by heart. All these provisions. Conclusion. So you got the concept how to write the answer. The Prashant Limited should disclose change in method of inventory and its effect on financial statement. The company may disclose the change in the accounting policy in the following manner. Conclusion. The company values its inventory at lower of cost or NRV. Since NRV of all items of inventory in the current year was greater than respective cost, the company valued its inventory at cost. Okay, so NRV is greater, na? NRV is greater. And in the year, present year, in the present year 2014-15 इलस्ट्रेशन 1 में ये गलती से हुआ है 2014-15 इधर 1-2 कर दो बेटा इधर 1-2 कर दो the company has changed the method to weighted average which better reflects the consumption pattern of inventory and for ascertaining the inventory cost from earlier practice of using FIFO for the purpose, and the change in the policy has reduced current profit and value of inventory by rupees 16,000. By rupees 16,000. Illustration 1 के conclusion में मेरे इसमें गलती हुआ है. So 2014-15 के बदले में 1-2 कर दिया मैंने उधर. And now you can take a screenshot. Yes. जो मैंने बॉक्स किया है वो रेड पेन से लिखो. जो मैंने बॉक्स किया है वो रेड पेन से लिखो. In 400 pages book. But don't write this by red pen. ना वो सिर्फ आपको हाईलाइट किया है. Don't write. Yes, maintain only 2 pens. One is black and second one is red. Please don't make your notebook एक रेनबो मत कर देना बेटा. Only 1 pen, black, and important points in red pen. Yes. जो भी बॉक्स किया है वो रेड पेन से कर दो. जो भी बॉक्स किया है वो रेड पेन से कर दो. कंक्लूजन पार्ट. सॉरी. हाँ, लो screenshot. Understood how to write the answer? Students are always asking me, sir. Normally students are asking me this question, sir, how to write the answer? This is how. Acha. Screenshots at the end. Okay. Screenshots we'll do at the end. ठीक है. Before break we'll do it. Okay. Don't worry. Screenshots एक साथ ही देता हूँ. ठीक है. Okay बेटा. Yes. जगन्नाथ लिमिटेड. चलो. Black pen is always, you have to write it in exam. Devendra Singh, I'm not ignoring your query. And whenever I'm ignoring your query, beta, I don't know about weighted average method. So Devendra,
आपको मैंने वापस से बोलता हूं, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था। 10 मैगीज हमने पहले परचेस की थी 10 रुपए से, 20 मैगीज हमने की थी परचेस 12 रुपए से। ये ऊपर लिख दिया जितना भी मेरा खर्चा हुआ, और जितने टोटल नंबर ऑफ मैगीज हुए वो 10 + 20 ये डिनोमिनेटर में लिख दिया बेटा। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है देवेंद्र, आपको थोड़ी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। देखो ये कोई आपको बोलेगा नहीं, बाकी फैकल्टीज, बट मैं आपको बोल दूंगा। नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट बेटा, टाइम लिमिट इज नेवर देयर, ध्यान में रखो। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, you can change your policy if you think कि this policy will result in better picture. If that policy results in better picture, you will definitely change the policy. In exam, black pen is compulsory. Yes, I forgot to tell you this instruction that black pen is mandatory because your paper now are going to scan. Okay, now no more physical copies are shared by institute to checker, paper checker, and black pen gives you proper scanner. Okay, scanning gets perfectly in the black pen, and therefore it is now mandatory to use the black pen. It is mandatory to use the black pen. Yes, Bhavika Kumari is saying, sir, I am direct entry students and haven't studied properly in the graduation. So I thought it will be difficult for me to study for, I find it easy to understand. Thank you, sir. You take care both direct entry students and uh, foundation students. Yes, thank you, Madam. Jagannath Limited had made a right issue. But this question is very important. Jagannath Limited had made a right issue of shares in 2002. Right issue means what? Right issue. Yes, your law faculty will definitely tell you what is right issue. Right issue means existing shareholder को you offer for the shares. Existing shareholder. Right issue. हक है उनका. Okay. एकदम सिंपल सा एग्जांपल है. Okay. तो बेटा मेरे बीवी का मेरे ऊपर हक है, इसलिए तो दिन भर मुझे डांटती रहती है, तो हक है उसका डांटना। तो सेम थिंग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विल गेट द राइट। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अभी बाजू वाली तो बीवी तो नहीं डांट सकती। ओके, जोक्स अपार्ट। हाँ जी, इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, यस हम तो उनकी भी डांट सहन कर लेंगे, क्या बात है। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर्स, इट हैड projected surplus of 40 crores during the accounting year to end on 31st March 2002. Yes, 40 crores during the accounting year to end on 31st March 2002. They projected a surplus. So, see, if you are giving ऑफर टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो यू आर शोइंग अ गुड पिक्चर टू देम ना। तो आप क्या करते हो, एकदम ऐसा गुड़ी गुड़ी पिक्चर उनके सामने रखते हो कि हाँ भाई हम लोग ऐसा कमाएंगे, 40 करोड़ रुपया कमाएंगे। सो इट इज यू आर शोइंग अ पिक्चर कि दैट दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, हाँ तो यस, सो हियर द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर prepared on hitherto following the accounting policies and presented for perusal of the board of directors showed a deficit of 10 crores. Oh, chalo. So 10 crores का deficit. Now what happened? ए बेटा, बोर्ड ऑफ स्टडीज का सेशन चालू है, हाँ आपको ऐसा मस्ती करना होगा तो अलग से सेशन रखूंगा। डेफिसिट ऑफ 10 crores, deficit of 10 crores. The board in consultation with managing director decided the following. Deficit of 10 crores. So beta, you have shown them picture of 40 crores. And when actual picture comes, you got only deficit of 10 crores. सर ये तो ऐसा हो गया। संकेत सर ने सिखाने के बाद हमने बताया उनको कि सर we will show you, we will score 60 marks, 60 plus marks, 80 marks, and you scored only 30 marks. आपने धोखा दिया सर। ओके, ओके, नाउ ओ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिसिट ऑफ 10 crores.
What happened? Deficit of 10 crores. The board in the consultation with the managing director decide the following. Okay. Value at the year end. Work cost rupees 50 crores. Now see beta. S2 inventory valuation we have not yet started. So this question, you won't understand it now. Okay. See, just I want to tell you, there are some expenditure, material, labor, direct expenses, and factory overheads. Just note down this. I will explain you this concept in S2, okay, or in costing. Costing mein we have expenditure ka bifurcation. So I will explain you it in the costing ka bifurcation, okay. Chalo. Now, yes, now prime cost. Prime cost क्या है? Material, labor plus direct expenses. Write down. Just note down it. Work cost includes factory overhead also. Prime cost not considers factory overhead. Overhead means indirect expenses. Prime cost considers only direct expenses. Okay. Foundation wale students, you are aware about this. Projected surplus means what? Projected means they shown. They projected when they want offer document. Offer document means when they ask for the profit, ask for the share to existing shareholder. They told them that we are going to earn the profit. 40 crores projected. मतलब हम कमाएंगे और कमाया कितना? लॉस 10 करोड़. फिर ऑडिटर आया बचाने को. ऑडिटर बोला भाई इन्वेंट्री यू वैल्यूड एट रॉन्ग प्राइस. क्या इन्वेंट्री वैल्यू किया? यू इन्वेंट्री यू रिकॉर्डेड एट मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. यू रिकॉर्डेड इट एट ओनली प्राइम कॉस्ट एंड यू शुड रिकॉर्ड इट एट वर्क कॉस्ट. आपने क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. Oh, work cost. Okay, we will change the method. Our profit will go up. Profit go up by 20 crores. Wrong policy. Okay, your previous auditor, he told you to record it at prime cost because he is not Sanket sir student. Okay, he told you that record it at prime cost. He is not aware about S22 inventory valuation. And now you are auditor after becoming CA. And you told them, Sanket sir taught us inventory valuation. In inventory valuation, what you have to consider? Material, labor, direct expenses, and factory overhead. And you ignored factory overhead. And that's why your profit goes down, my friend. Oh, so now you increased your valuation and increase your valuation by 2 crores, sorry, 20 crores. बल्ले बल्ले बेटा, एकदम मजे में. हाँ जी, yes, ठीक है. We got the concept. So we should record it at factory cost. We should record it at work cost. Factory cost means costing में सिखाएगा. यह एक ही नाम है, अलग अलग है. Work cost, factory cost एक ही है. ओके चलो. हाँ आशुतोष, आई नो ग्रेजुएशन में ऑलरेडी कवर्ड दैट. कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है रही. एज पर S1, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट, रट्टा मार इन द करंट पीरियड. बेटा ये लैंग्वेज लाना पड़ेगा. ये 3 लाइंस सेपरेटली कहां तो भी लिख के रखने के इन योर 100 पेजेस बुक. ऑल रट्टा मार पॉइंट्स टुगेदर. ओके, रट्टा मार पॉइंट्स टुगेदर. तो थोड़ा देर बैठता हूं अभी. करंट पीरियड और विच इट रीजनेबली एक्सपेक्ट टू हैव द मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज. सर नोट्स टू अकाउंट्स एनालिसिस. बड़ा 1.5 घंटा आपको बोर नहीं करने के देने का कितना बड़ा चैलेंज होता है रे हम लोगों को. 2.5 घंटे का लेक्चर और आपने बीच में छोड़ना नहीं चाहिए. हम लोगों को कितना बड़ा चैलेंज होता है. और फिर भी हम लोग हमारी जान लगा देते, बट आप लोग 2 घंटा हमें बेयर नहीं कर सकते. ऐसे जो बच्चे बीच में से छोड़ के चले जाते, बेवफा नहीं होना है. बिल्कुल भी लेक्चर के बारे में बेवफा नहीं होने का. ओके, पूरा लेक्चर लास्ट मिनट तक अटेंड करने का. तो एनालिसिस. ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंटरी हैज बीन वैल्यूड एट द वर्क कॉस्ट ₹50 crores अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग एट प्राइम कॉस्ट, that is the 30 crores as was the practice till last year. Okay, we change the method, sir. We change the method.
Now we are recording correctly, and as a result our profit is increased by 20 crores. Happy. यस, 20 करोड़ से तो बढ़ा दिया। अब प्रॉफिट लॉस में से प्रॉफिट में आ गई। अभी क्या हुआ भाई, सेकंड बताओ। प्रोवाइड फॉर परमानेंट डिमिनिशन। परमानेंट डिमिनिशन, डिमिनिशन मीन्स डिक्रीज। व्हाट इज द मीनिंग? परमानेंट डिमिनिशन मीन्स डिक्रीज। क्या मीनिंग होता है परमानेंट डिमिनिशन का? हाँ जी बेटा, परमानेंट डिमिनिशन मीन्स डिक्रीज, डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। बेटा एक ही रिक्वेस्ट है आपको, आप दो रिक्वेस्ट, एक नहीं दो रिक्वेस्ट है। वन, fill your feedback forms. In every session you can fill it, no problem. After every session, please, it is not only for my sessions, it is for your future sessions. If you are loving any faculty, you are loving teaching style of any faculty, you understand each and everything of that faculty, please, for the benefit, see, out of 1000 students, I cannot keep all students happy. Okay, मैं मेरे बीवी के लिए कितना भी काम करूं तो भी मैं उसको हैप्पी, एक दो चीजें मेरे से गलत होने वाली है। सो सिमिलरली आई कैन नॉट मेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैप्पी। दे विल फाइंड कि नहीं नहीं, अदर फैकल्टीज आर गुड, इट्स ओके, बट दिस फीडबैक फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट to get your favorite faculty as a teacher, for not only for your batch, for future batches also. If you have any problem with me, you can share it with me on comment section, no problem. If you think you have to give negative feedbacks, that is also allowed. But one thing is important, not only for my subject, always give your feedback forms, because ICAI wants to run this activity not only for your batch, at long-term purpose. ICAI wants to expand this activity and it's only for your benefit. So after every session, likes button को press करते जाओ. After every session, views देखो. After every session, give feedback. Because I am telling you the fact, here in our classes, in ICAI classes, कोई भी फालतू चीजें नहीं होती. We stick to our syllabus. We stick to what is going in the real practice, and in study material, we are expecting from students how you should write your answers in exam, and this is why we are here. We are getting less time, but number of hours are more. So you also know, maximum 2.5 hour session to attend the accounting class or theoretical. Now this is becoming theoretical. Day by day, account subject is not no more practical. It is becoming theoretical. Now I think I'm not a practical teacher. I'm a theory teacher after this accounts. Okay. So yes, I just want to tell you these things because your feedbacks are very important for us. So ये share करते जाओ बेटा, आपके लिए और हमारे लिए भी, ठीक है? और second thing, attend it live. Attend it in the live only. Yes, because afterwards, after the, we will say only कि yes, I will go for this recorded lecture, I will attend it, और वो attend करना रह जाता है, और finally your backlog एक समंदर हो जाता है. If you miss any session, don't worry, try to attend next session. In next session you will get it. Don't worry बेटा, next session में आपको सब समझ में आ जाएगा. So this is not like costing subject. These topics are not interrelated, or income tax. The second session you won't understand. One thing in my session, beta, I'm very happy. Now one standard is not related to another standard. So suppose if you have any personal problem on any day and you missed my session, okay, it's okay. And then in that case, beta, try to attend next session and try to finish your first session. Okay, whenever you will get the time. ठीक है, ये दो चीजें आपको करनी है. आज तो आपने मैक्सिमम अटेंडेंस लगा दिया है, रिकॉर्ड ब्रेक अटेंडेंस की आज. अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्यार होने लगा है क्या आपको? यस, यू टीचर्स कॉस्टिंग ऑल्सो. भाविका, कॉस्टिंग हिंदी में रहेगा बेटा मेरा, आपको यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा मैं. यस,
चलो ठीक है। सो Sarvana ji, now this paper actually becomes daily, you know, practical subject is not no more advanced accounting subject. So try to understand this subject is totally changed. And when we will shift to chapter 11, 12, 13, then better we will move to practical part, last 4, 5, last module of your study material. So you have to study this like theory only. And I think I'm making it simple. Okay. Provide for permanent diminution in the value of investment. Accounting standard 13 will take care. Permanent reduction and the amount of provision is 10 crores. So beta, yes, 10 crores ka loss you have to book as per AS 13. And I'm going to teach you in accounting standard 13 that permanent reduction we have to record it for. So just note down these things. During the year, the company decided to provide the 10 crores for permanent fall in the value of investment, which had taken place over the past 5 years. As a result of the change, the provision has to be made and your losses, profit disclosed by the accountants, reduce karna padega, reduce the profit by 10 crores. Got this? Yes. Okay. And how to write the answer, I told you. Facts of the case and all. So study material ka answer, yes, beta, I have made it very simple. Facts of the case and analysis. In study material, you will get in the paragraph form and you will get in my notes it in the facts of the case and analysis of the case and conclusion part. Okay. Last question is very important. Last question is very, very important. Yes. Anyone? I'm giving you 3 minutes to read the question. This question is very important and tell me the interpretation of this question. Yes, how many of you can tell this? But Tunishka, you will understand second point in S13. So have patience. Just remember, you have to make a provision for that 10 crores. Okay, loss record karna padega. Permanent reduction, what is there? You will understand it in S13. Don't worry. In in the month of November, I will go explain you. चलो रीड करो, यू रीड करो, रीड करो. देवेंद्र बेटा ऐसा नहीं होता है. कभी कभी हमें क्लास को इतना सारा पढ़ना है ना बेटा, कि कभी कभी हमें लास्ट में स्पीड भी ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत समंदर है. और कुछ टाइम में ना बेटा बहुत लॉजिक 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 करते बैठोगे ना, तो बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि इतना समंदर हमें तैर के जाना है. ओके. तो कभी कभी आपको ऐसी कश्तियां भी आएंगी तो जहां पे आपको जंप मार के जाना पड़ेगा. ओके. थोड़ा सा लहरें आने वाली है, ऐसे ध्यान में रख. जिसको मुश्किल होगा थोड़ा, पर उसको हमें थोड़ा सा काट के आगे जाना है, ये ध्यान में रख बेटा. तो हर बार पे तू ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे समंदर एकदम सीधा मिलेगा. नहीं होगा भाई. तो कभी कभी मुझे फास्ट भी रहना पड़ता है देवेंद्र. और सभी बच्चे मेरे लिए सेम है, तू भी और ऑल स्टूडेंट्स. तो निगेटिव व्यूज मन में मत आने दे. कभी कभी बेटा मुझे आगे बढ़ना पड़ता है. और यू कैन सी दिस लेक्चर आफ्टरवर्ड्स, और एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से. आशुतोष, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. इलस्ट्रेशन 3, डोंट वरी. चलो इलस्ट्रेशन 3, अभी मैं कुछ बात नहीं करूंगा. आई एम गिविंग यू 3 minutes, proper 3 minutes to read this. Try to recall it or read it carefully. This question is really difficult one. Okay. अरे बाप रे. Okay, Devendra ji. I'm 62 years old. Oh my God. Hats off to you. Yes, I will take care of you. Don't worry.
You are of my father's age. I will definitely take care of your questions. See the spirit of this man. I will solve your question at the end of the session. Devendra ji is promise. Weighted average method I will take at the end. Last 1.5 minutes. Let's start. See, 3 minutes are sufficient. Last question hai before break. So have patience. Okay. Definitely. बैच 7 में और अब मैं आप फिट दिख रहे हो बेटा जिम चालू कर दिया ना अभी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली XYZ company is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position. Since most of the asset, see. Now this XYZ Limited is in the liquidity problem, liquidity, cash problem. They are in the cash problem. Okay. Now, since the most of the assets of the company are blocked in the various claims. Okay. Since most of the assets of the company are blocked in various claims, petitions in a special court, XYZ has accepted intercorporate deposits against a company. There are many cases which are going on. Okay, company is in losses. Also, they have a bad name in the market. No one is giving them loan. They already have some loan. Intercorporate deposit. They have taken a loan from other companies, intercorporate, other companies. And it is making its best efforts to settle the dues. They are trying their hard best, but the problem is that they are not getting a success.
they cannot pay the obligation. They are trying their best. There were claims at varied rates of interest from lenders from the due date of ICD to the date of repayment. Due date to date of repayment. See, I have taken loan on 1st January 2020 for 3 years. For how many years? 3 years. So my due date of repayment, due date is 31st December 2023. But what happened? I haven't paid loan up to 31st December 25. And I paid loan on, I'm going to pay on repayment date because I do not have money and I'm planning for this. And I'm thinking that I will pay this loan after 2 years. Till this date, lender charged me 10%. But after due date, if I haven't paid, he will ask me to pay 15%. Some lenders are telling me to pay 14%. So various rates, whatever they think fit. Okay. So they will tell me, no, you have to pay at the rate of 15%. You haven't paid on due date. And that's why what happened. So I'm also in the tight position. Suppose I'm XYZ company. The company has provided interest. Provided means they passed entry. They already provided for the interest. As per the terms of the contract till due date. Till due date, company has provided interest. Interest account debit to interest payable. They already provided. But after due date क्या हुआ देखो. Yes, 1 minute. Till due date, interest is provided. Interest expenditure is recorded. Though it is not paid, but we booked expenses. What is the entry? Interest is a kharcha. Interest expense book kiya to interest payable. To interest payable. I have shown it as a liability. Understood the diagram? Okay. So on due date. But after due date, what happened? The company has provided interest as per the terms till contract till due date. And note, no entry, only a note in their financial statements. In financial statements, they just disclosed. Note means what? No entry, but only they disclosed a non-provision of interest on the due date to date of repayment was affected in the financial statement. So this period ka interest, ye period ka interest they booked, but from due date to repayment date, they haven't record expense, but they have given a note, only disclosure. On the account of uncertainties existing, what note they have written? The determination of the amount, because they are asking for any interest rate. They are already better in trouble. Who? Not company, that lender. Lender is also better. They are shouting, you are not paying my interest on due date. So now you have to pay 14% interest. So they are shouting like this. Okay. Determination of the amount. And we are saying, no, we won't pay 14%. It is unreasonable. So company ka stand kya hai? Company ka stand is that we are not aware about the, we know we are in the problem, but we are not going to give you 14%, unreasonable amount. Okay, so this uncertainty exists about the amount. And in the absence of specific legal obligation at the present, so you can file a suit against us. Company is saying you can file a suit against us, no problem. And the company considers these claims are in the nature of claims against the company not acknowledged as a date. Company के against case है, but it is not a date. Date नहीं है, because final rate we are also not aware about. Yes, these rates. Okay. So company is telling to in financial statements to their shareholders, okay, we have not provided the loan. We have just disclosed it because yet the amount is not finalized.
and the same has been disclosed by way of note instead of booking the खर्चा, instead of provision in the P&L. एक बार हिंदी में समझ लीजिए, एक बार हिंदी में समझ लीजिए अच्छी तरीके से. So South Indian students, I hope you understood it now. It's very simple. Yes. Very good, Jyoti. Yes, try to understand it in Hindi. I know this question is difficult one. IMP question. Normally students are not getting this concept. Okay. So try to get the concept now. Illustration 3. क्या बोल रहा है देखो. Illustration 3 ये बोल रहा है कि कंपनी ने लोन लिया, XYZ कंपनी ने लोन लिया. लेंडर्स कौन थे? तो दूसरी कंपनीज थी जिन्होंने उनको डिपॉजिट्स दिए, दूसरी कंपनी ने उनको पैसा दिया. ड्यू डेट था 3 साल बाद, 3 साल के लिए लोन लिया. कंपनी की सिचुएशन टाइट है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है. पैसा नहीं है तो 31 मार्च को क्या किया, कंपनी ने बोल दिया भाई हमारे पास पैसा नहीं, मैं लुक्खा है तो इसलिए मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा. कंपनी ने हाथ ऊपर कर दिए, जब पैसा आएगा तब मिलेगा, ज्यादा डांटने का नहीं. दूसरी कंपनी बोल रही है क्या ये तुम लोग है, तुम लोगों ने पैसा टाइम पे क्यों नहीं दिया, अभी हम लोग तुम्हें 10% इंटरेस्ट था अभी 15% लगाएंगे. बाकी की कंपनी शाउट कर रही है. यह कंपनी बोली देख भाई किसी के दिन बुरे नहीं होते, ये ध्यान में रख, आज हम लोग बुरे दिन में है क्योंकि नसीब का पार्ट है, कल अच्छे दिन आने वाले हैं. ओके. कंपनी जो है वो ये बोल रही है, कंपनी बोली अभी 15%, वो लोग बोल रहे 15% से लोन देने का, जा नहीं देता केस कर मेरे अगेंस्ट, जा केस कर मेरे अगेंस्ट, जो करना है कर ले. अच्छी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, दिमाग मत सटका. ये कंपनी XYZ बोल रही है. ओके. XYZ ने बोल दिया शेयर होल्डर्स को देखो भाई ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, 15% से तो मैं लोन कोई देने वाला नहीं हूं, जो करना है करने दो. ठीक है. और ये जो है ना ड्यू डेट के बाद वाला 10% से मैं देने को तैयार हूं, और ड्यू डेट के बाद वाला जो पेमेंट है मैं करूंगा पर मेरे इंटरेस्ट के परसेंटेज से करूंगा, ये 15%, 20%, 18% ये मैं नहीं दे सकता हूं. कंपनी ने बोल दिया पोजीशन टाइट है, कंपनी बोल दिया कि ये मेरे ऊपर अभी मुझे पता ही नहीं मैं कितना पैसा उनको दूंगा, तो मैं ये नोट में लिख देता हूं कि मेरे अगेंस्ट केस चल रहा है, केस नहीं मेरे अगेंस्ट की अनसर्टनिटी है, ड्यू डेट के बाद वाला पेमेंट ये लोग कुछ भी मांग रहे, 10%, 15%, 20%, मैंने तो 10% से पैसा उठाया था अभी 15% मांग रहे, मेरी हालत का फायदा उठा रहे. कंपनी है सदमे में और उन्होंने लिख दिए नोट. क्या नोट लिख दी, मेरे अगेंस्ट लोन चालू है, डेट है, पर मैं अभी तक उसको फाइनल नहीं बोल रहा हूं. अरे भाई 10% की तो प्रोविजन कर, गलत है. मैनेजमेंट 10% तो देना पड़ेगा ना, 10% देना पड़ेगा. आप बोल रहे हो मैं कुछ भी प्रोविजन नहीं करूंगा, कैसे अलाउड करेंगे. अकाउंटेंट जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, ये गलत बात कर रही है. ये कंपनी को, ये कंपनी की मैनेजमेंट जो है ना जो कर रही है वो मत करने दीजिए. 10% का तो भी इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, भले 14% मत कीजिए, 15% मत कीजिए, पर जो पिछला रेट है वो तो कंटिन्यू करो 10% का. तो आपने जो प्रोविजन किया कंपनी जी की मैनेजमेंट, भले आप कितने भी लिक्विडिटी पोजीशन कितनी भी टाइट होने दो, पर हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे. हम लोग एटलीस्ट 10% की एंट्री पास करेंगे, भले आप पेमेंट करो नहीं करो बाद में जो भी होगा, पर हम लोग इंटरेस्ट को बुक करने लगाएंगे. एज एन ऑडिटर अपना ओपिनियन करेक्ट है, हम लोग बोलेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग चलेंगे, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको 10% की एंट्री करनी पड़ेगी. अभी लिखना है एग्जाम में, ये लैंग्वेज में तो लिखोगे नहीं. अभी एग्जाम में कैसे लिखना है चलो देख लीजिए, एग्जाम में कैसे लिखना है. समझ में आया सबको? बड़ा क्वेश्चन है, देख के डरो मत. संकेत सर ने पूरा डिटेल में पिक्चर सामने लाया है, पूरा डिटेल में पिक्चर सामने लाया है. अंडरस्टूड ना अभी सब लोग, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले? यस. हाउ टू राइट द आंसर. XYZ accepted the intercorporate deposits. For interest on such deposits, provision is not made due to uncertainty in the determination of the amount and absence of any specific legal obligation at present. The company has disclosed the interest claims by the way of notes in accounts, not allowed. Notes in accounts, not allowed. Okay. Yes. पार्थ राणा बोल रहे सर हिंदी इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन. अरे वाह पार्थ राणा, मेरा हिंदी एक तो थोड़ा अपना ऐसा ही छे, थोड़ा अलग लेवल का महाराष्ट्र वाला, तो समझ लीजिए हिंदी के भी लगी हुई है मेरे. यस. XYZ एज एक्सेप्टेड, ये तो समझ में आया सर, प्रोविजन है. एज पर S1
Disclosure of accounting policy. It considers the prudence concept. So prudence concept, rattamar. The provision should be made for all known liabilities and losses, even though the amount cannot be determined with the certainty and represents only the best estimate in the light of available information. So prudence be explained karna hai. You have to explain prudence also and accrual also. Accrual also. Is one of the fundamental accounting assumption, so long as, so you have to give two answers, huh? Not only prudence concept, and this is the provision, you have to write it in the exam. If you don't write, you say only in one line, provision has to be made for the interest, you will get only half mark out of 5. You have to give this provision properly in exam. Prudence concept and accrual concept is one of the fundamental accounting assumptions. So long as the principal amount for loan is not repaid, the lender cannot be replaced in the disadvantageous position of for non-payment of interest in respect of overdue amount, irrespective of the terms of contract. You cannot say like that. The lender is not fixing the amount. No, no. Yes. After that, as per the facts of the case and the provisions of AS, the company should provide for the liability since it is not waived by the lenders at amount estimated on the reasonable basis based on the facts and circumstances of each case. Better see, write in the simple language. At least mention these two words, prudence concept and accrual concept. No need to write in the same way. You can interpret in the same, you can write it in the own language, that is English only, but in the simple one. Okay, so it's not like that ki you should record it in the same sentence as ratta mar wale. Ratta mar wale try to write it in the same way, but conclusion part you can write it in the simple way. Okay, so make it simple and try to understand the concept and interpret it in the own way. Okay, no need to write in the same way as study material way. No beta, simple language में भी लिख सकते हो. Don't worry. Non-provision of interest, overdue interest liability amounts to violation. Violation मतलब, yes, violation means क्या बेटा, आपने rule को तोड़ा है, breaking of the rule of the accrual basis of accounting, and hence treatment done by the company of not providing the interest amount due from the due date to date of repayment is not correct. Okay, sir, we have done with this accounting standard. Yes, so अभी मस्त मस्त स्क्रीनशॉट लेने का बेटा स्टार्टिंग से, और अभी पहले तो 5 मिनट देता हूं पूरा पूरा इंडेक्स से. कैटेगरी मतलब बेटा बी कैटेगरी. बी कैटेगरी मतलब एवरेज, मतलब सिंपल वाला. ए मींस भारी कैटेगरी, यस मेन कैटेगरी. ए कैटेगरी क्वेश्चंस यू विल read it at the time of exam, okay, and before exam also, minimum 4 to 5 times. B category question you can leave it in the option दो बार. C category is most easy, and Z category you can ignore that question at all. Okay, so A B C Z संकित सर ने ये categories किए हुए. चलिए, so write down this index. एक इंडेक्स का स्क्रीनशॉट फटाफट. ब्रेक ब्रेक मिलेगा अभी दिव्या बेन, ब्रेक तो बनता है. यस अविनाश भाव. हाँ, अप टू 10% यू कैन प्रोवाइड इट, वट एवर द रीजनेबल. चलो स्क्रीनशॉट्स हो गया 3 तक, टीवाई के 6-7. ब्रेक के पहले मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए आपको. And my dear students, you are going to write this in 400 pages book. Better now you can write Sarvana ji in my way. अविनाश जी बोल रहे हैं कि सर अकाउंट पेपर इज नाउ लाइक लॉ पेपर. यस बेटा, आई नो दैट, बट डोंट वरी बेटा, we will make it very simple. After the break, we are going to start with the accounting standard 17. कोई भी मिस नहीं करेगा आफ्टर ब्रेक. आई नो यू आर हंग्री. टेक 15 मिनट्स का मस्त ब्रेक. 7:50 को आ जाओ, 8:30 तक सिखा दूंगा. कंक्लूजन पार्ट.
ममता जी का क्वेश्चन क्या है सर? इंटरेस्ट रेट किसने किया? कंपनी का इंक्रीज? अरे बोलने वालों ने किया ममता, किसी ने इंक्रीज नहीं किया। जो लेंडर है ना वो बोल रहे भाई ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो तुझे मुझे जो रेट होगा वो रेट पे वो लोग बोलेंगे ना, अभी वो लोग डिक्टेट करेंगे टर्म्स। आपने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया तो वो कुछ भी बोलेगा 15% से अभी देना पड़ेगा करके। तो इज्जत से पैसा दिया रहता तो ये बात नहीं आती थी, अभी नौबत आ गई। अभी वो लोग बोलेंगे ना, डिक्टेटर हो जाएंगे लेंडर्स। जिन्होंने पैसा दिया वो डिक्टेट करेंगे। अब ये लोग बोलेंगे जाओ कोर्ट में। इलस्ट्रेशन 2, एनालिसिस ऑफ रोमन 2। 400 पेजेस के बुक में करना है बेटा ये। गुंजन, ये आंसर है कि नहीं बेटा? प्रोविजंस रट्टा मार वाला लिख सकती है तू। ठीक है, सो 3 क्वेश्चंस एंड टीवाई के क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, सो यू कैन डू बाय योर ओन बिकॉज S1 के टीवाई के क्वेश्चंस आर रियली वेरी सिंपल दैट यू कैन डू बाय योर ओन। थैंक यू, टेक केयर। अप टू ब्रेक, ब्रेक के बाद हम लोग वापस मिलेंगे। यस, ब्रेक लेना है, ओनली 15 मिनट्स। 7:50, 30:45, यस 50, 7:50 तक ब्रेक है।
यस बेटा, वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर ब्रेक। बेटा थोड़ा सा खाना खाने का टाइम रहता है और बीवी प्यार से रोटियां बना के दी तो थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सो दिस इज वेरी सिंपल स्टैंडर्ड segment reporting. This is one of the disclosure standard. So beta first standard is disclosure. Name itself suggests disclosure of accounting policy. S17 is segment reporting. Before starting S17, I will show you annual report of our favorite company, Indian Tobacco Company, ITC. Okay. So ITC ka I will show you the yes. मेल करीजिए। ओके, I will show you segment reporting of ITC. So it will be very easy for you if you understand it practically. And this is a benefit in the ICAI classes, beta. You will get everything. बड़ा रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। सो डाउनलोड होने को इट टेक्स टाइम 15 seconds। टिल दैट टाइम आई कैन सी द रिपोर्ट का पेज नंबर। यस, पेज नंबर इज हो गया क्या डाउनलोड? हाँ जी, हो गया, फाइनली डाउनलोडेड। हाँ जी, सेगमेंट रिपोर्टिंग। See some words that you are not aware now, but after the standard, after understanding the standard, I can tell you, you can easily correlate these words with your accounting standard. So, okay. So everyone, चलो चलो चलो, वापस वही एनर्जी चाहिए बेटा। सेम एनर्जी से मुझे आप लोग यहाँ पे चाहिए। ओके सर, S17 इंपॉर्टेंट है। In segment reporting, you can check here. There are two types of segments. One you can see external is a business segment. First thing, the first word, this is a business segment. In business segment, beta, how they have divided it? FMCG. What is full form of FMCG? Can you tell me it in the without looking into Google? Okay. You already have it in business communication, BCK, business commercial. था क्या बेटा आपको? Okay. So you can see here, there are two
segments. Business segment. Business segment is the first segment. In business segment, what they have written here? Yes, what they have written? FMCG. Yes. Anyone? फुल फॉर्म क्या है बेटा? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स. अरे वाह मेरे शेयर लोग. वेरी गुड. फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स. वेरी गुड. सो एफएमसीजी. क्या हुआ स्क्रीन को? हाँ. Then they have cigarettes and others. You can see they have hotel business also. Then they have agri business also. So they are not in only one line. Not only cigars and cigarettes. They are in others. Others matlab, okay. Hotels. Yes, beta. They are in hotels business also. Agri business, agriculture business also. And your notebook. Paper boards, paper and packaging. So you can see they have different types of segment. Sir, might be they have other segments also, but which they have not disclosed over here. And why they have not disclosed over here? Yes, it has some exceptions. Okay, that exceptions we have to understand. So what is the first word you understood by looking into the report? What is the first word? Yes, beta. What is the first word you understood? क्या word use समझ में आया आपको? First word is a business segment. क्या समझ में आया आपको? पहला वर्ड बिजनेस सेगमेंट. एंड हाउ मेनी बिजनेस सेगमेंट दे हैव? एफएमसीजी, hotels, yes, agriculture business, and paper boards, paper packaging. Okay. Now, here there are three words: external, intersegment. Intersegment means they can switch some goods from one segment, sale for one segment might be purchases for another segment. Okay, so might be they need some for paper, some trees, and that might be from agriculture business, they can buy it. Okay, so intersegment. And third one is a total. External, internal, and total. So this is how you have to present. See, now they have one word which is called as segment revenue. Please note down these words at least on rough page कि सर ने कौन से नए words बताए. Yes, segment results, segment revenue, segment results. And third one you can see here. Yes, segment results. और तीसरा segment assets are there. What is there, beta? Segment assets and liabilities. So three words: information about segment revenue, segment results. Revenue means turnover. Okay, revenue means turnover. Results matlab profit or loss of segment, and segment assets and liabilities. You can easily correlate this, beta. बहुत ही easy है. So what are the new words you understood in this standard? Chalo, try to make a list. Tell me it in the comment section फटाफट. Everyone will write because this standard is very new for you. देखो बेटा, दो टाइप के सेगमेंट होते हैं. अभी तक मैंने एक ही बताया, बिजनेस सेगमेंट. अभी तक मैंने क्या बताया? वन सेगमेंट इज देयर, बिजनेस सेगमेंट. दिस इज अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड. एक बार हिंदी में बता देता हूं. ये सिर्फ आपको बैलेंस शीट और पीएनएल में किधर भी अफेक्ट नहीं होता है. ये सिर्फ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है. इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड. डिस्क्लोज करना मतलब क्या? सिर्फ आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना. आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना. कौन से माध्यम से पहुंचाना बेटा? कौन से माध्यम से पहुंचाना है? तो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्लोज की जाएगी. यस, डिस्क्लोज किया जाएगा पूरा इंफॉर्मेशन. सेगमेंट रिजल्ट्स बिजनेस सेगमेंट होता है. और एक सेगमेंट होगा जो किसको पता है कौन सा सेगमेंट होगा? यस, एनी वन ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस बिजनेस सेगमेंट? फिर एक नया वर्ड आपको क्या समझा?
बिजनेस सेगमेंट के बाद सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट एंड सेगमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. चलो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. वेरी गुड. सबसे तेज किसने लिखा? राहुल शर्मा, एनआरओ स्टूडेंट. देन स्वाति, वेरी गुड. रितो, डोर ओपन कर. गौरी, मालविका, सुंदरन, यस. बिजनेस सेगमेंट. अरे वाह, अरे वाह, सब मेरे शेयर पूरा अटेंड कर रहे हैं आज. फुल अटेंडेंस टुडे टिल लास्ट मिनट. 300 प्लस वापस आ गए आज. बिजनेस सेगमेंट, yes. After that, segment revenue, segment result, and last but not least is, yes बेटा क्या होगा? हाँ जी, segment assets and liabilities. Understood new words? कुलदीप बोल रहा है सर एनआरओ डब्ल्यूआरओ क्या होता है? एनआरओ मतलब अपने इंस्टीट्यूट ने बेटा पूरा इंडिया ना डिवाइड किया हुआ है. वेस्ट वाले, मैं महाराष्ट्र से हूं तो वेस्ट में हो, ठीक है. वेस्ट बंगाल वाले बेटा ईस्ट में है. एनआरओ ऊपर वाले नॉर्थ वाले, सी सेंट्रल, एंड साउथ वाले एस. तो कुलदीप आप कहां से हो? तो आप सीआरओ से हो, आप सेंट्रल वाले हैं. शायद से आप एमपी यूपी वाले दिख रहे हो. चलिए, नाउ आई वांट टू शो यू सम अदर सेगमेंट ऑल्सो. Secondary segments. See, primary segment also, and this is secondary segment. And secondary segment, you can see here, there is a geographical segment. Geographical. Within India, outside India. So, their market is not limited to Indian market. ITC has market revenue from outside India also. They have very less assets outside India and capital expenditure. Now, this is not given as per AS17, but they have shown it. Assets, capital expenditure within India, outside India. So, segment assets, segment revenue, and segment results are three categories, and main two categories. So, there are two types of segment. One is business segment, and second one is geographical segment. Got the concept? Easy che? And see, both segment information they are giving in the same report, then it is called as matrix presentation. What is called as beta? See the word. This is called as matrix presentation. What is called as beta? Matrix presentation. When both are given in the same report, means business also and geographical also. अरे समझ में आ रहा है क्या? क्या नाम होता है? दोनों एक साथ होंगे तो मैट्रिक्स presentation. Matrix presentation. So primary segment is business. Now in this question, so ITC are showing. So this is disclosure. First thing you have to make clear, this is not accounting standard. This is only disclosure. No journal entries for recording business segments. No journal entries. Only bifurcation. External, internal, revenue, then they have result, then they have asset. Geographical segment, only two categories. India, outside India. Business segment, four categories. FMCG, now in this, they have four categories. FMCG others, five categories. Hotels, agribusiness, paper boards. So 5 segments in their report. ITC में 5 है. क्लियर है क्या पिक्चर? सो डिस्क्लोजर समझ में आया क्या आपको? हाउ नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू. नाउ द क्वेश्चन इज, सर ऑल सेगमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस रिपोर्ट. डू यू थिंक दे हैव ओनली इतने सेगमेंट्स होंगे? देयर माइट बी वेरियस सेगमेंट्स, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थ्योरी. मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन, दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन.
Yes. Abhi, which segments you are going to record? For this, we have to take one problem. Today, I'm not going to tell you theory. Today, first, I will explain you problems. Then it's your duty to read theory in the next session. And next session, I will explain you in more detail theory of this accounting standard. Yes. Are you finding it easy? मजा आया क्या बेटा आपको A17 पढ़ते टाइम? आर यू टेकिंग इट वेरी इजी और यू आर थिंकिंग इट वेरी डिफिकल्ट? क्या लग रहा है आपको? इजी और डिफिकल्ट? चलो, theory I am not going to explain it today. For A17, I have a different way of, teaching. For every standard, I have different ways. For A17, I have different way. I won't explain you theory today. It's your responsibility to read it at home. Aha, learning new techniques. चलो, हाँ जी. See, beta, now see this business. They have 6 segments. I will explain it in Hindi also. Don't worry. So keep patience. Lavanya is saying it's difficult. 18 नहीं है रे, ये 17 है. सोलंकी जी, ये 17 है. देखो अभी तक आपको क्या क्या वर्ड समझ में आए? बिजनेस सेगमेंट, जोग्राफिकल सेगमेंट, सेगमेंट रेवेन्यू, segment result, segment assets and liabilities. Now, in business segment means their business segment means there are different types of businesses. It's tobacco business, it's cigarettes business, it's agriculture business for this report. There are hotels, then they have paper, and geographical mein within India and outside India. They have bifurcated in very simple way. And when this presentation is there, both segments ka, so it is called as, हाँ जी, page number 4.53. 4.53. हाँ, okay. Swati beta, those student who has written up difficult, for them it is always difficult. Okay. So अभी जिन्होंने लिखा है difficult, इतना explain करने के बाद भी, I have shown you real life example, first one, and then beta I am starting with this accounting standard. Still you are finding it difficult, तो बेटा क्या बोलूं अभी मैं? स्वाति, if you say difficult ना, it will be always there. फिर ऊपर से आवाज आएगा. It will be difficult. Yes. Segment assets. Now see, total is 200. Total कितना है? 200. Whatever assets you have, total is 200. And there are 6 segments. M, N, O, P, Q, R. Accounting standard 17 tells you only important segment you will record it. Only important segment. Sir, now what is important segment? The segment which has more than 10% amount. If your assets are 200, then if you are having 20 rupees, more than 20 rupees assets, 20 or more than 20, then that segment will be called as reportable segment. Means you are going to present it in your report like that.
FMCG, agri, paper. So you will report it. So only important segment I will report now. Suppose I am in the teaching profession. I have practice also. I have one hotel. Apart from that, I have two salons. Okay. And apart from that, I have, yes, one, manufacturing business as a shareholder, I have invested. Okay. So ball bearings and all they produce. So there also I am a shareholder. My main income I am getting from teaching. Second income from practice. Third income from restaurant. Fourth income from salons. And last income from my investment in one manufacturing company as a shareholder. I am there as a shareholder. So they are giving me dividend. Okay. Now, very less income from that company. So whether it is my reportable segment, if I want to present, I want to tell you my main incomes. So I will tell you my main incomes only from those segments from which I am earning good money. Okay. So where I have recorded more assets, where I have invested more, where I'm getting good results, where I'm getting good turnover, that segments are reportable segments. Okay. So that segments are reportable segments. So which are my reportable segments over here? Always 10%. Always 10%. Okay. So 20 is the criteria. 20. So 20 or 20 or more. So aim is reportable. Reportable. So I will record reportable as tick and not reportable as cross. Okay. As cross. So which are reportable, beta? Hanji. MNOP. Okay. So here 200 into 10%. Sir, see, in results, it will be different story. In results, it will be a different story. Try to understand first. Keep a separate group of negative figures. Negative figures. 190, 10, 30. 190 plus 10, 200. 200. No. 30 क्यों लिया, sir? 30 is positive. Okay. So negative figures are 200. Take their absolute value. Absolute means convert it into positive figure. So minus 200, negative, you will convert them into absolute figure. Absolute means what? Take them as a positive. And all positive figures together. 50, 10, 10, 30, 60, 70, and 30 is 100. Whichever is higher. Whichever is higher. तो हायर कौन सा है बेटा? 200. सो निगेटिव फिगर्स आर ग्रेटर देन पॉजिटिव फिगर्स और उसका 10%. 20. If you have negative figure more than 20, that is a reportable segment. If you have positive figure more than 20, it will be reportable segment. So more than 20, yes. 190, yes. More than 20 ना. 190 consider absolute figure. Absolute मतलब क्या? Positive figure. 10. No. 10, no. Yes. So this is 10% criteria. And 1,200 into 10%. 120. More than 120. Yes. Oh no. P no. No. You can see here segment assets. M, N, O, P, Q, all are reportable. And R is reportable under segment results. So whenever you will prepare business segment, these all segments
are any covered in at least one of the above criteria. Therefore, all segments are reportable segments as per A17. So what is the criteria? 10% का criteria. What is the criteria? 10% का criteria. Okay. So 75% का criteria, I won't explain it today. You are going to explain it in the next session. There is one criteria which is of 75%. And once you got the 75% का criteria, then beta any problem will be easy for you. Okay? एक बार सब कुछ हिंदी में समझ लेते हैं. जो भी है पूरा हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे. अभी हिंदी में आपको किसी किसी स्टूडेंट्स को ज्यादा क्लियर हो जाता है, और मेरा तो आप लोग दोनों साइड से टाइम लेते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. यस, ऑलवेज 10%. Divya Kumari, yes, beta, really I am telling you, all means I'm not the owner of all business. My mom is owner of restaurant business and salon business. हाँ जी बेटा, तो मैं नहीं हूँ ओनर पर अल्टीमेटली, क्योंकि बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर ICAI Act regulations, you cannot be owner if you are in the full-time practice, and if you have COP, you cannot be owner of other businesses because you should give justice to your practice. Therefore, beta, I'm not the owner in that business. चलिए एक बार हिंदी में समझ लेते हैं. देखिए बेटा, दो टाइप के सेगमेंट होते हैं. एक बिजनेस सेगमेंट होता है, एक ज्योग्राफिकल होता है. बिजनेस मतलब आपकी लाइन में अलग अलग टाइप के बिजनेसेस क्या क्या होंगे, मतलब आप एक ही बिजनेस में क्या क्या बिजनेसेस अलग अलग कर रहे हो. तो यहाँ पे ITC कंपनी देखो बेटा, टोबैको कंपनी है. देखने गए तो टोबैको कंपनी में सिगरेट्स में ज्यादा इनका बेचने का माल ज्यादा बेचा जाता है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी है, होटल बिजनेस में भी है. मतलब वो डाइवर्सिफाइड, पैसा पैसों को बनाता है बेटा, पैसा पैसों को बनाता है. अभी इतना पैसा बन चुका है ITC के पास, तो बहुत सारे सेगमेंट्स है. तो सभी के सभी सेगमेंट्स रिपोर्ट करे क्या सर? नहीं सर. तो एक 10% का क्राइटेरिया होगा. सर उनको तीन चीजें रिपोर्ट में डालनी पड़ेगी. कौन सी तीन चीजें? सेगमेंट एसेट को डालना पड़ेगा, सेगमेंट रिजल्ट को डालना पड़ेगा, सेगमेंट रेवेन्यू को डालना पड़ेगा. यही तो दिखा है ना सर ITC के रिपोर्ट में. रेवेन्यू था, फिर रिजल्ट था, फिर एसेट था. सर ये सेगमेंट्स को, कौन से सेगमेंट, मतलब अभी 50 सेगमेंट है तो 50 सेगमेंट का रिपोर्ट कितना बड़ा हो जाएगा सर? हाँ, इतना बड़ा रिपोर्ट हम लोग प्रेजेंट करेंगे क्या? नहीं सर. हर सेगमेंट का इंपॉर्टेंस देखना है. जो सेगमेंट 10% से छोटा होगा तो वो इतना मटेरियल नहीं है उसको रिकॉर्ड करना. शेयर होल्डर चाहता है कौन सा रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट ये मटेरियल है. जिसमें से ज्यादा कमा रहे हो वही तो बताओ ना. जो छोटे छोटे बिजनेस है वो काई को बता रहे हो? वो मत बताओ. हमें उसमें इंटरेस्ट है. आपका मेन बिजनेस जो होगा वो बताओ, और मेन बिजनेस के साथ साथ जो 10% से ज्यादा कमा रहे हो वो बता दो. शेयर होल्डर को बोल दिया आपने. शेयर होल्डर ने आपको S17, देखो कितना ट्रांसपेरेंसी लाया है. जब आप सिर्फ नेट प्रॉफिट और P&L देखते हो, P&L, तो P&L आपको पूरा का पूरा दिखता है भाई. इसमें से इतना मिला, इसमें से इतना. संकेत सर का फाइनल टैक्स रिपोर्ट देखा तो आपको कौन से इसमें से कितना प्रॉफिट आया वो नहीं समझेगा. आया समझ में? तो इसीलिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 लाया. S17 क्या बोलता है कि आप सिर्फ डायरेक्ट नेट प्रॉफिट मत बताओ. लॉजिक देखो क्या है स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करने का. लॉजिक इज वेरी सिंपल. एक ही बिजनेस का नेट प्रॉफिट मतलब ओवरऑल प्रॉफिट है, और आपके लाइंस कितने सारे हैं. अभी अलग अलग लाइंस होंगे तो अलग अलग लाइंस में से बिजनेस में से पैसा बताओ. हम शेयर होल्डर हैं, हम लोग जानना चाहते हैं, जानना चाहती है इंडिया कि आपने क्या रिपोर्ट बनाया. ओके. तो सर इसीलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन बाय अवर डियर इंस्टीट्यूट. क्या बढ़िया इंस्टीट्यूट, जहां पे चाहिए पारदर्शिकता वहां पे लाती इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड.
क्या बात है सर, इंस्टीट्यूट ने जिसने भी ये सोचा होगा, यस बहुत बढ़िया। अभी इन्होंने क्या बताया आपको कि आप सर 50 बिजनेस है, 50 के 50 रिकॉर्ड करने हैं? नहीं सर, पहले तो आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट्स एंड सेगमेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब टर्नओवर, सेल्स। जो सेगमेंट में आपका सेल्स 10% से ज्यादा है उसको रिपोर्ट कर दीजिए शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को बता दीजिए कि इसमें से मेरा टर्नओवर ये सेगमेंट है, इसमें से 10% से मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सर कुछ सेगमेंट लॉसेस में भी चलेंगे, चलेंगे ना सर, बिजनेस है, सब में से प्रॉफिट आएगा बोल नहीं सकते। ट्राई किया था, आजमाया, पर लॉस हो गया, ठीक है, दूसरे सेगमेंट में से कमा लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारे बिजनेस है, अल्टीमेटली शेयर होल्डर का पैसा, हम लोग ट्राई कर रहे थे नई नई चीजें। ओके, अभी बेटा सिंपल सी चीज है ना, रोज रोटी बना के बीवी बोर हो चुकी है, एक दिन पिज्जा बनाया, एक दिन चाइनीज बनाया, और बेटा एक आध बार नहीं जमा, मतलब तो मैं क्या सब कुछ उसको बोलूंगा क्या कि तुझे सब प्रोडक्ट अच्छे बनाने का होते हैं? हाँ बेटा, उसके खुशी के लिए मैं हर बार बोलता हूँ हाँ हाँ हाँ, पर हर बार ऐसा होगा क्या कि हर प्रोडक्ट में से वो जो भी बना रही है वो बहुत बढ़िया बना रही है? नहीं हो सकता। वैसा ही सेगमेंट का है, जहां पे आईटीसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, लक नहीं काम में आया, लॉस में चले गए। लॉसेस वाले डिपार्टमेंट को अलग करने का, लॉसेस वाले डिपार्टमेंट को अलग करने का, सेगमेंट्स को, डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, बिजनेसेस बोलेंगे, बिजनेस सेगमेंट है ये। लॉसेस वाले सेगमेंट को अलग किया, प्रॉफिट वाले सेगमेंट को अलग किया, दोनों में से विचेवर इज हाइयर होगा वो देखने का। अभी यहाँ पे लॉसेस वाले जो थे उनको कन्वर्ट करने का, 190 और 10, उनकी टोटल आई -200, और पॉजिटिव वालों की आई 100। अरे बस, और ये तो लॉस वाले 14 है, ठीक है ना, प्रॉब्लम है वो, रियल लाइफ में कहाँ होने वाला है ऐसा। -200, -200 को कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया? +200 में। किसमें कन्वर्ट किया? +200 में। विच इज हायर, तो 200 को लेके चले 10%, और बाकी सभी सेगमेंट को पॉजिटिव ही कंसिडर किया, 200 से 10% ज्यादा होंगे उनको हमें देखना है, तो वो रिपोर्टेबल हो गए। एंड जहां पे एसेट्स का भी वैसा ही किया, जहां पे एसेट्स का 10% लिया, वो सब जहां पे ज्यादा थे वो हमने कंसिडर किया। इससे हमें मिला सेगमेंट एसेट्स के अंदर कौन रिपोर्टेबल है, तो MNOPQ तीनों पांचों रिपोर्टेबल है। सेगमेंट रिजल्ट्स की वजह से कौन रिपोर्टेबल है? M रिपोर्टेबल है, N रिपोर्टेबल है, और डायरेक्टली R रिपोर्टेबल है, R भी आ गया ये लिस्ट में। और रेवेन्यू के केस में सिर्फ M और N रिपोर्टेबल है, क्योंकि वो 10% के क्राइटेरिया से ज्यादा आ रहे हैं, बाकी नहीं लेने हैं। तो अभी कोई ना कोई सेगमेंट कोई ना कोई क्राइटेरिया के अंडर आ रहा है, तो इसके लिए हमारा ये क्वेश्चन में सभी स्टैंडर्ड्स जो है, सभी सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल हो गए। और ये था हमारा स्टैंडर्ड 17 का एक छोटू सा पार्ट, एक छोटू सा पार्ट। 75% का क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, जो मैं आपको अगले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, और उसकी थ्योरी आपको सीख के आनी है। ओके, हाँ जी, यस। अभी एक और क्वेश्चन है, देखो, यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाना था आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में, एक मस्त रिपोर्ट बनाना था। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रिपेयर अ सेगमेंट रिपोर्ट फॉर द पब्लिकेशन in Diversifies Limited. Last 5 minutes, beta. We have finished with the session. Almost we are at the end of the session. टोटल प्रॉफिट का 10% नहीं, लॉसेस का और प्रॉफिट का, पॉजिटिव फिगर का अलग अलग करने का, उसमें से जो हाइयर आएगा उसका 10% लेना है। लॉसेस को अलग पकड़ो, प्रॉफिट को अलग पकड़ो, उसका 10%। ओके, विच इज हाइयर। हाँ बेटा, स्मॉल सेगमेंट्स अफेक्ट कलेक्टिवली, बट वी कांट रिकॉर्ड ना ऑल स्मॉल सेगमेंट। इट इज वेरी बिग रिपोर्ट बेटा, इन दैट केस यू कैन विजुअलाइज ना कितना बड़ा रिपोर्ट हम लोग लिखेंगे तुषार, इट्स नॉट पॉसिबल। यस, हरीश सिंह जी, वेरी गुड। सो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। यस, वेरी गुड। सो प्रिपेयर सेगमेंट फोर्जिंग शॉप डिवीजन। अब ये वन ऑफ द डिवीजन है, फोर्जिंग शॉप। उनका दूसरा डिवीजन है ब्राइट बार, एंड उनका तीसरा डिवीजन है फिटिंग डिवीजन। ओके, अंडर फोर्जिंग शॉप डिवीजन दे सेल ब्राइट बार, सो दिस इज इंटरनल, दिस इज इंटरनल।
Bright bar is their internal segment. So they are selling to them. And these two are external. Other domestic and export sales. हाँ जी. नहीं बेटा, all information you have to report. Once it is a reportable segment, you have to report all these things. Though they are 10% criteria के नीचे होंगे. For some criteria, they are below than 10%, but still we will record all their revenues and all. Huh? Beta, हाँ. Good question. Harish Singh ji, yes. Harsh Singh ji, sorry. Bright bar division. This is external. Sales to no. Fitting division, sir. Internal. And external sales to Wanda. Wanda African country है शायद से. हाँ जी. External. Maldives. External. Pre-tax operating results. Okay. So this is profit before tax. What is this? Profit before tax. Head office cost reallocated. Reallocated means they have divided head office cost. You have to take it combined. Interest cost is also you have to combine. Fixed asset, head office ka assets and other assets. Net current assets, long-term liabilities. And you are required to prepare this report under segment reporting. Sir, question very easy question. And you will get for 10 marks. 10 marks to 8 marks. 8 marks to 10 marks के लिए इतना easy question आएगा. Very simple question. And you can see the answer. First you will divide under segment. I will show you the answer. Don't worry. मेरे तरीके से बताता हूँ. So you can take a screenshot afterwards and please write down this answer. Yes. I have not taken your theory in this session. I have shown you practically how the standard is going to useful. S17 से बेटा MNOPQR. हाँ, illustration 1 लास्ट में आप लोग लेना बेटा इसके स्क्रीनशॉट्स. हाँ जी. सी सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स थोड़ा सा अलग है. सेगमेंट रेवेन्यू you will underline segment revenue. Then sales. There are two types of sales. What are the columns? Serial number, particulars, divisions, forging, bright, fitting, inter-segment elimination, and then consolidation. This column is IMP. Inter-segment elimination. Okay. C. See the table. First one, how to record it for forging. Segment revenue. Segment revenue means sales. So sales to bright bar 4575. This is internal sales. Okay. This is internal sales. So external sales, you will make under sales two columns, external and internal. In external also two columns, rows, domestic, export and total. Domestic, export and total. And finally, total revenue. So external, first category external, under external, domestic, export, total. Then internal and then total revenue. So 5. How many lines? 6 lines. How many lines under sales? 6 lines. Recall, external, domestic, export, total, internal, total. Okay. In index, I will give you it in writing next session. Okay. Then you have segment result. Wait. So first we will finish this. 4575. Where to write? Internal. Yes, internal. 4575. Under forging. 90. Under domestic.
and export 6135. Total external 6225 plus 4575. So you are getting 10,800 total revenue. First one over. Sales ka over. Next, bright bar. Sales to fitting division. Fitting division, where you to write? Internal. So you can write over internal 45. Please finish it today itself. 300. Wanda export. Total 300 and total revenue 345. Last one. Only external. 270 export 270 and no need to write it under inter-segment because there is no inter-segment. So over. Okay. Now inter-segment total is 4620 and we are going to eliminate that. How? 4575 plus 45. 4575 plus 45 and you are going to, when you are showing it as a consolidation, under consolidation you will eliminate इंटर सेगमेंट. हम हमें ही जो सेल करेंगे कैसे लिखेंगे? मैंने मेरे बीवी को ही 5 रुपए का सेल किया, कुछ माल मैंने उसको 5 रुपए में बेचा और घर का प्रॉफिट निकाल रहे, तो मैंने बीवी को जो माल बेचा वो देखूंगा या दूसरों को बीवी को जो बेचा वो देखूंगा? तो बेटा बड़ा ऑब्वियस दूसरे के बीवी को जो माल बेचा है वो मैं देखूंगा. घर में ही मैं कुछ बेच रहा हूं तो वो कैसे अलाउ करूंगा? एकदम सिंपल है. जब मैं ओवरऑल प्रॉफिट निकालूंगा, ओवरऑल सेल निकालूंगा, तो घर में जो सेल कर रहा हूं वो नहीं लेना है. घर में जो सेल कर रहा हूं वो नहीं लेना है. आया समझ में? जब कंसोलिडेटेड निकालूंगा, जब बेसिक डिवीजन वाइज सेल करूंगा तो आई विल कंसिडर इंटरनल, बट व्हेन आई कैलकुलेट कंसोलिडेटेड आई विल एलिमिनेट दैट. सो मुझे ये एलिमिनेट करना है. 4620 and I will get 6795 as a total. Over? Yes. चलो ये पहला पार्ट खत्म. सेकंड पार्ट, pre-tax operating result. So second one is segment result. Segment result, how much is the segment result? 240, 30 and minus 12. Total is 258. But out of that, HO expense either लिखो don't bifurcate. Don't bifurcate. Segment wise, you will take a total. What is the total? 72 plus 36 plus 36. What is the total? 144. So I will consider 144 as overall expenditure. फिर I will get operating profit. 258 minus 144, 114. And then interest cost is also combined. Don't bifurcate. 6 plus 8 plus 2, 16. And then profit before tax. Over. And last segment is assets and liabilities. This is segment revenue result. And this is segment revenue. And last one is segment assets and liabilities. You will consider 360, 180, 540. You will consider 180, 60 and 135 segment assets. And this is red pen, unallocated corporate asset. This is you are going to write as unallocated corporate asset. Unallocated corporate asset 75 plus 72 directly in consolidated total 147. Consolidated में किधर लिखेंगे? Consolidated में. Please make sure today you are going to write it all things. Beta, I won't help you out to write this. I can show you this, but ultimate writing you have to do at your own and do practice, because this question is of 10 marks. Only fill in the blank. Only fill in the blank. Asset, result and revenue. Bus. Total assets you will write over here. Then segment liability. 30, 15 and 180. Yes. 30, 50 and 180. And unallocated corporate liability. Last column. Unallocated corporate liability. Last column 57 and total liabilities. And geographical. So this is basic segment. And then geographical. Geographical में domestic sales, export sales, then export to Wanda, export to Maldives and consolidated. It's very simple. Domestic sales, कौन domestic sales कर रहा है?
only forging. Other are not doing domestic sales. Internal sales you won't consider. Only export. Internal is not in the geographical market, geographical segment. Then you have export sales, Vanda and Maldives, and then total. This is very simple. Geographical market, don't consider internal, but here you will consider internal also. External plus internal in business segment. And this presentation is called as matrix presentation. इसको क्या बोलते हैं? Matrix presentation. Beta, we have finished with 2 examples. I hope you understood it. Internal means अपने आप में जो बेचा. This is a format. You have to write it in the 400 pages book. Unallocated मतलब किसी एक को नहीं मिला, सब में कटा. जब सब में कटेगा तो तीनों में नहीं बटेगा, जो एक में ही होनेगा. सिर्फ एक में ही है तो वो होता है अनएलोकेटेड. इट इज नॉट टू इंडिविजुअल डिवीजन, इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक डिवीजन. याद रखो. आई होप यू अंडरस्टूड इट. टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि. हम मिलेंगे फ्राइडे को. और आपका होमवर्क है आज, बहुत होमवर्क है, बहुत होमवर्क है. यू हैव टू फिनिश दिस 2 क्वेश्चंस. यस बेटा, ये दोनों क्वेश्चंस आपको खत्म करने 1 and 4. बट बिफोर दैट S1 के क्वेश्चंस बिफोर ब्रेक लिए थे, तो वो याद करो. स्क्रीनशॉट्स आपने निकाले नहीं रहेंगे तो लेक्चर पे जाके वो कंप्लीट कीजिए. एंड आई होप यू एंजॉयड माय सेशन. फीडबैक्स आर मैंडेटरी एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. लाइक बटन को प्रेस करना और ICAI को ऊंची उड़ान लगाओ. चलो, सब पास होने वाले हो आप. थैंक यू एंड गुड डे, गुड नाइट, नॉट गुड डे, अभी क्या गुड नाइट. ओके, चले. थैंक यू.